Now, relationship between dielectric constant and susceptibility. Relationship between dielectric constant and susceptibility. This guy. So, for this, let us consider a region here where the electric field E naught is applied. That means here is positive and here it is negative. Here the charge density is sigma positive, here it is minus sigma. And so E naught will be equal to how much? In case of the parallel plate capacitors, what is the value of the electric field between the two plates? Yes, that is sigma by epsilon naught. Very good. Now, if suppose some dielectric medium is placed over here, so what is going to happen? This electric field will polarize the dielectric, as I told you earlier. So here will be negative, here will be positive, here will be negative, here will be positive. Here negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative and positive. And likewise, negative, positive, negative, positive, like this. These will cancel out, but only we will have negative appearing this side on this face of the dielectric and positive appearing on the other side of the dielectric. So here one electric field is induced and which is in the opposite direction to the applied, and that is suppose EP. So net electric field in the dielectric will be equals to E naught minus EP. Means this is the electric field. Actually electric field was E naught, and in this region where the dielectric is placed, if one electric field EP is produced, so the net electric field in this region will be E naught minus EP. So this way E naught will become E plus EP, and this EP is P upon epsilon naught. Or you can say here is this EP will be equal to sigma P upon epsilon naught. So here it is minus sigma P and here it is plus sigma P. Now this P is equal to actually sigma P is P. I'll explain this later. As in case of this polarization vector, we know that this P was chi epsilon naught E. So by replacing this P with this, we get E naught equals to E plus chi epsilon naught E upon epsilon naught. So this epsilon will cancel out. So what we get? We get E plus chi E. That means here we have E into 1 plus chi. We also know that dielectric constant K is E naught upon E. That means we can have
this E naught is equal to this E into 1 plus chi and upon E, so they will cancel out, so it will be 1 plus chi. So dielectric constant K is 1 plus chi. So this is the relationship between dielectric constant and susceptibility. एक बार फिर से देखते हैं. Dielectric constant, we know the ratio of the electric field in vacuum upon electric field in the medium. Suppose this is the positive plate and this is the negative plate. So here the charge density is plus sigma and here it is minus sigma. In the absence of the dielectric medium, the electric field between the plates is E naught, that is given by sigma by epsilon naught. When this dielectric medium is placed over here, so due to this applied electric field E naught, this dielectric will start polarizing, and after polarization, we will have a net negative charge on this face of the dielectric and positive charge on the opposite face of the dielectric, and the polarity of this field or the charge density will be in the opposite direction of the applied one. So here we have minus sigma p, here it will be plus sigma p, that is the induced. That means in this region an electric field is induced, that is known as EP, and that EP is in the opposite direction to the applied field E naught. So if we try to find out the total electric field in the region where the dielectric is placed, will be given as E equals to E naught minus EP. So that means this E naught will be equal to E plus EP. So E naught will be equal to E plus, and this EP is always equal to P by epsilon naught. Although the electric field will be, according to this, it will be sigma P by epsilon naught. So sigma P is actually P. That I'll explain now. So this P, and also we know that P equals to chi epsilon naught E, polarization vector. We have already studied just. So now replacing this P with this, E naught equals to E plus chi epsilon naught E by epsilon naught. Epsilon naught will cancel out, so we'll get E naught equals to E plus chi E. Taking E common, we get E naught equals to E into 1 plus chi. We know dielectric constant K is equal to E naught by E. So replacing E naught by E into 1 plus chi and divided by E is already there. So this E will cancel out and we get simply 1 plus chi. That means K equals to 1 plus chi. So this is the relationship between dielectric constant and susceptibility. Now let us explain or discuss how sigma P is equal to P or P is equal to sigma P. So if suppose this dielectric has the area A, then the charge induced will be equals to sigma P into A, and the dipole moment, that dipole moment is, that is the induced dipole moment. Induced dipole moment will be equals to Q into dipole length. Q into dipole length. And if the dipole length is D, suppose, so dipole length is D, because this is negative, this is positive, the dipole length is D. So this will be QP into D. That means sigma PA into D. That is nothing but sigma P into volume. And now the polarization vector P is defined as the total dipole moment induced in the dielectric, dipole moment divided by volume, yani unit volume. The dipole moment, the total dipole moment induced or produced in unit volume of the dielectric. So that means sigma P into V upon V, that is sigma P. So that is why
this P was replaced by sigma. This sigma, or you can say P, nothing, same. Whether you write it sigma P by epsilon naught or P by epsilon naught, it's one and same thing. हेलो बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करने से पहले जो कि आपकी प्रॉब्लम थी कि भाई वो समझ नहीं आ रहा डाइलेक्ट्रिक वाला, मैं आपको कुछ ये देख रहे हैं, आपको कुछ कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, इन कैपेसिटर्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा और आपने देखे भी होंगे। ये तो बेटा वो आपके फ़ैन वाला है ना, ये फ़ैन वाला है, ये भी आपके फ़ैन वाले ही हैं, ये दोनों है ना, एक सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए थे। ये भी फ़ैन है, फ़ैन पे है, ये फ़ैन वाला है। ये पहचानो जरा किसका है, ये वाला और ये वाला, बिल्कुल ठीक। ये एसी यानी एयर कंडीशनर के ऊपर लगते हैं ये। अब इसमें देखो आप 2 टर्मिनल हैं और इसमें आपको कितने दिख रहे हैं, 3 टर्मिनल हैं। ये सारी बातें मैं बताऊंगा कि यहाँ 3 क्यों होते हैं, 2 क्यों होते हैं, और कुछ आप ऐसे देख रहे होंगे ये कैपेसिटर है ना, इसमें ये क्या दिख रहा है, ये माइनस सा लगा हुआ दिख रहा है। 3300 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट, इसमें देखिए कितना लिखा हुआ है, 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैराड। इसमें देखिए क्या लिखा है, ये तो नेगेटिव हो गया, और इधर देखिए क्या लिखा है, 25 वोल्ट 3300 यानी 3300 माइक्रोफैराड। ये छोटा दिख रहा है आपको, इसमें देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये भी 2200 माइक्रोफैराड है, और कितना वोल्ट है, 25 वोल्ट। ये 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैराड। और इसमें तार एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, तो जो छोटी है वो नेगेटिव के लिए है। देखिए अगर मैं इनको दोनों के बराबर लेके आऊँ, एक छोटी है एक बड़ी है, देखिए यहाँ पर एक छोटी है एक बड़ी है, छोटी वाली नेगेटिव, बड़ी वाली ये तो मैंने कनेक्ट करने के लिए रखा है ताकि एक्सपेरिमेंट करते समय ये होगा, इस तरह से बनाई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, 2.5 माइक्रोफैराड और 440 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज। इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, 2.5 माइक्रोफैराड और 440 वोल्ट एसी, देखिए 50 हर्ट्ज, देखिए दिख रहा है ना, तो ये सब है ना, ये सब में ऑलमोस्ट यही देखिए 2.5 माइक्रोफैराड 440 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज है, ±5%। ये भी हम समझाएंगे आपको बाद में डिटेल में। तो बेटा इसमें क्या है, आप इसमें देख रहे हो आपकी 2 टर्मिनल हैं, और आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन भैया आता है वो कहीं भी जोड़ देता है उसको। तो क्या इनमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, क्या इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं? अब इसमें अगर है 3 है तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर क्या होगा इसमें, ये कैसे होगा? लेकिन इसमें आपने देखा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला थोड़ा बड़ा भी बनाते हैं, ये छोटी होती है पिन, ये देखिए पॉजिटिव बड़ी पिन होगी और ये छोटी पिन होगी, नेगेटिव वाली छोटी, पॉजिटिव वाली बड़ी। ये देखिए नेगेटिव वाली छोटी, पॉजिटिव वाली बड़ी। पॉजिटिव में दिखाने का एक जगह लिखने से हो जाता है, अगर एक नेगेटिव लिखता है तो दूसरा पॉजिटिव ऑटोमेटिकली। तो ये ऐसा कैसे होता है? तो ये जो कैपेसिटर्स हैं इनको कहते हैं नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स। क्या बोलते हैं इनको? नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स। और इनको आप किसी भी तरह से लगा दीजिए, ये पंखे के ऊपर इधर से लगा दीजिए, उधर लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एसी में इधर लगाओ उधर लगाओ फिर। हाँ, ये 3 वाला किस लिए है? इन 3 वालों में भी वही है कि इधर लगा दीजिए, लेकिन ये फिक्स है। इसमें फिक्स कैसे है कि ये वाला जो कॉमन है, ये कॉमन है क्योंकि एसी के अंदर क्या होता है, एक तो फैन होता है और एक कंप्रेसर होता है। तो अगर ऐसा वाला लगेगा तो फिर आपके 2 लगेंगे, कंप्रेसर के लिए अलग लगेगा और फैन के लिए अलग लगेगा। इसमें आपका एक ही से काम चलता है क्योंकि ये कॉमन में चला गया और यहाँ पर आपने फैन जोड़ा और इधर से जुड़ गया,
इधर से आपने कंप्रेशन जोड़ा और इधर से उड़ गया, तो कॉमन दोनों के तार यहाँ आएंगे जुड़ के, यानी इसमें जाके फैन पे जाएगा, फैन से फिर इसमें जाएगा, इसमें जो है कंप्रेसर जाएगा, कंप्रेसर से फिर एक इसमें भी आएगा। तो ये कॉमन टर्मिनल है, ये आपका कंप्रेसर वाला है और ये आपका फैन वाला है। ये जो कैपेसिटर्स हैं वो आपको स्टार्टिंग दिलाने के लिए जनरली यूज़ करते हैं, जैसे पंखे में एकदम किक लगाना हो, जैसे वो सलमान खान की किक होती है स्टार्ट करने के लिए, वो ज़रूरी है। पिक्चर थी ना किक, तो इनिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, तो इसी तरह यहाँ पर जो है वोल्टेज को एक बार बढ़ाने के लिए एकदम से करते हैं और उसके बाद ये चलता है। ये वाले जो हैं, ये जितने भी हैं बेटा, ये वाले ये सारे ये कहलाते हैं एसी सर्किट्स में यूज़ होते हैं, इसलिए इनका पॉजिटिव नेगेटिव कहीं कुछ नहीं होगा, ये एसी सर्किट में यूज़ होंगे। अब ये जो पॉजिटिव वाले हैं ये क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर जो है ये हमेशा डीसी सर्किट्स में आते हैं, यानी जहाँ पर आपका डायरेक्ट करंट होगी वहाँ पर ये यूज़ करना है। तो ये कंफर्म है कि ये पॉजिटिव पे ही लगेगा, नेगेटिव। जब आप रेक्टिफायर बना देते हैं ना, तो रेक्टिफायर के बाद आप जो है पॉजिटिव नेगेटिव का करना होता है, फिल्टर करना होता है, तो ये वहाँ यूज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में होते हैं आपके। तो ये ध्यान रहे कि जहाँ डीसी होगी वहाँ पर जो कैपेसिटर्स होंगे वो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स होंगे और उनके अंदर हमेशा वो पोलराइज्ड होंगे। पोलराइज का मतलब पोल्स बने होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स। जबकि एसी सर्किट्स में नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स होंगे, यानी जिनके अंदर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। आप पॉजिटिव इसको जोड़ दीजिए, इसको नेगेटिव में जोड़ दीजिए, या इसको पॉजिटिव जोड़ दीजिए, इसको नेगेटिव जोड़ दीजिए, तब भी काम करेगा, दोनों तरह से काम करेगा। तो इसके बाद चलिए अब हम आगे कैपेसिटर्स की बात करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। Now we will discuss the actual problem faced by the children and asked by them, that the capacitance of a parallel plate capacitor having dielectric medium between the plates. Now since we have understood how the dielectric medium is affected by the electric field, now we can easily understand it now. So capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric. So let us say this is the parallel plate capacitor with having charge density sigma. Here it is minus sigma, so it is plus, this is plus, this is plus, this is negative, this is negative, this is negative, and this is negative. Now the separation between these plates is D. Now a slab of dielectric of thickness T is introduced. This is the T thickness. What will happen? Initially, the electric field between the plates was sigma by epsilon naught. Due to polarization, here the negative charge will get induced and here the positive, as I explained earlier. So here it will be minus sigma P and here will be sigma P. That means between this dielectrics, electric field is produced EP or UI, whatever you call it, which is just opposite to the applied field, that means initial field E naught. So what will be the net electric field in this region? The net electric field in the region of dielectric medium means how much distance? T thickness में, that will be equal to E, let us say
So this E will be equals to E naught minus EP. This will be E naught minus EP or EI, whatever you call it. And that is always equal to what? E naught upon the dielectric constant K. If it's a dielectric constant is K, then electric field in a dielectric in a certain medium is always E naught by K. So the electric field between the plates in the region without dielectric, or you can say free space. That free space is what? D minus T. This is the free space. He is this one and this one. So that is how much? D minus this T. So this is free space. In this region, electric field is E naught. Here also E naught, but here it is E. So that is E naught. Now if we try to find out the potential difference, therefore potential difference between the plates is V equals to E naught into D minus T, because V equals to E into D, plus E into T. Here is E naught, here is E naught, and here is E. So this E into the thickness will be the potential difference here, and rest of the space will have this much. So that means this will be equals to E naught D minus T plus what we can write, E equals to E naught upon K into T. The dielectric K is always equal to E naught upon E. So according to that we can just have it, this E will be equal to E naught by K. So that is equals to E naught into D minus T plus T by K. Now capacitor, the medium, that will be equals to Q by V. Now Q equals to what? Sigma into area. And what is V? V is E naught D minus T plus T by K. And what is the value of E naught? That is sigma by epsilon naught. So that will be sigma A upon sigma by epsilon naught into D minus T plus T by K. Sigma will cancel out. So C medium will be equal to epsilon naught A upon D minus T plus T by K. So this is the, and if fully filled, that means if the dielectric is completely filled, so that time D and T are same. So this D minus D will be 0 and this will be D by K. So then C medium will be equal to epsilon naught A upon D by K. That means epsilon naught A by D into K. That means C naught K. एक बार फिर से समझ लेंगे. We have to find the capacitance of a parallel plate capacitor when some dielectric medium is placed between the plates. So if you see, these are the two plates of the capacitor which are at the charge density sigma and here minus sigma. So the electric field between the plates become sigma by epsilon naught, that we know very well. Now if this
slab of thickness T, dielectric is inserted between the plates, then due to polarization, the negative charge will be appearing on this face of the dielectric slab, and sigma P, that means positive charge, will be appearing on this other edge. So due to which some electric field will be induced, which is EP, and this EP is always equal to sigma P by epsilon naught, that we have already studied. But this electric field induced, if you call it EP or EI, whatever you call it, you can write it. So that is always in the opposite direction to the applied field or the existing field E naught. So the net electric field in the region of the dielectric, only this region, will be how much? That will be E equals to E naught minus EP, and that is equal to E naught by K, because in the medium we have already studied in case of the Coulomb's law, F naught upon F is always equal to K. Similarly, E naught upon E is always equal to K. So E equals to E naught by K. Now we know electric field between the free space, the space without the dielectric. So this is always E naught. So that means electric field E naught is in the region D minus T, and field E is in the region of thickness T. Now the potential difference between the plates of the parallel plate capacitor will be electric field into the distance, that means E naught into D minus T, this is space, and E into this distance T. Replacing the value of E as E naught by K, we get E naught into D minus T plus E naught by K into T. Taking common E naught, we get E naught into D minus T plus T by K. Now, capacitance in the medium, that is, let us say it's Cm. So that is Q by V. So Q by V, and the Q is the sigma into area. Charge, this is the charge, and sigma is the charge density, charge per unit area. So charge per unit area into area is total charge, and V is E naught into D minus T plus T by K. Now replacing this E naught by sigma by epsilon naught. So here we get sigma by epsilon naught, sigma gets cancelled, and D minus T plus T by K in multiplication. Now this epsilon comes up, and you get Cm equals to, that means C medium equals to epsilon A upon D minus T plus T by K. When the capacitor is fully filled, this means it is completely filled, that means here this will be T, dielectric equal to D. So T equals to D, that means D minus D, that is 0, and then D by K. So you will have epsilon A upon D by K, and this K comes out above in the numerator. So this is Cm equals to epsilon A by D into K, that is C naught into K. So here we know that dielectric constant is equal to what? F naught upon F medium, E naught upon E medium. But in case of capacitor, it is reversed. C medium upon C naught. ये ध्यान रखिएगा. फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम रहता है, कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है. C मीडियम अपॉन दिस. डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. फिर भी अगर कोई अभी भी समस्या है कहीं पर, तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. और एक चीज और, इफ यू आर न्यू in the channel, then don't forget to subscribe the channel and share these things to other students so that उनका भी कुछ भला हो जाए. तो जितना भला कर सकते हैं उतना भला करिए, और लोगों के साथ अपना शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उसको भी फायदा होगा. थैंक यू.